Let's confirm everything is fine now. Okay. ठीक है. So we'll wait till 3 minutes and let everyone join, and then we'll start the Q&A today, guys. Good evening, Akash. Okay, let's wait for another few minutes, guys. Another more minutes. Let's everyone join. Okay. Is there any way we can get some discount on basis certification exam? Yes. Uh, if you go to our channel at the top, you can see my number, Akash. You can reach out to me. I can help you to get some discount. I don't know, guys, today what is happening. This today is the first time this is becoming very interesting. Ki I can see it's been 3 minutes 36 seconds and I can see only one people in the live. Is there something wrong in the setting? Why not YouTube allowing my videos to get visible to others, especially today? Don't know why. Okay, no worries, let's wait. Akash, in your case, you can just reach out to me. I can help you to get some discount. So I'll wait till 6 minutes. It's already approx 5 minutes. If we are not getting much people or not much questions, we're gonna end this live discussion today itself, means within minutes.
Okay, Akash. So in that case, obviously you can directly connect me, right? Directly connect me, I can help you to get some discount. To all of our students, whatever will be the standard fees, in that standard fees, we gonna have you some discount. Have you means will able to get you some discount. जो भी फीस होगी ऑफिशियल उससे थोड़ा हम कम करा सकते हैं. ओके फाइनली 6 minutes हो गए हैं. And I think guys I need to end this live because I can see only one people in this live Q&A. So ठीक है. Sir, can you please explain me about interview, like I'm scared about the interview, Akash. Interviews are very easy. You can go to our website edu.clinicalstudyacademy.com and there is an book we have published. It's gonna cost you few hundreds, maybe 3-4 or maybe some hundred, and you'll get a bunch of 100-200 questions. Those are interview questions only. Just prepare those questions, you are ready enough. And to be frank, interviews are very easy if you are giving on on the basis of SAS and clinical. So some questions gonna be from SAS and some questions gonna be from clinical. SAS questions are all about concepts and solving a problem using the coding knowledge. Clinical questions are all about again the concepts of SDM, ADAM or all these IGs. On top of that, the variable logic. What is the logic behind the variable? Do you understand the variable or data set or not? Let's suppose SF data set. What it does it gonna contain? It gonna contain the screen failure data, right? So AE data set, what it gonna contain? Adverse event data. So what are the important variables of this data set? So these kind of fundamentals should be clear, and if you have created some data set, questions gonna be smoother or only, don't worry. Even if you face difficulty, that gonna be the max 1 or 2 interview. After that everything will become smooth. And if you want to get it smooth from the beginning itself, just prepare well the SAS and clinical part, that's all. सर 8,000 सैलरी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ठीक है क्या? एज अ फ्रेशर गाइस, अभी करंट कंपटीशन में आई बिलीव, इफ नॉट इन करंट कंपटीशन, आई वर्कड 7-8 years back for free. I think 6 years back for free for this role, statistical programmer, because my intention was get the knowledge first, eventually I'll get the salary and everything. I got the knowledge and then eventually got the salary and everything. So don't look for the salary as in fresher. If the role is good, in demand, growth is high, so initial 6 months salary doesn't matter much. स्टार्टिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. सर HR ने मुझे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं, बताता हूँ, जल्दी बताओ फिर. So I'm little bit scared about scenario. I become blank for minutes. Start with the basics now. Let's suppose there is a scenario where she is telling you कि there is a variable a which contains a string. उसमें कुछ words हैं, या एक word है शुभम, उसमें से 3 लेटर एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है? तो अब लेट्स सपोज आपको नहीं समझ आ रहा क्या यूज़ करूँ, कौन सा यूज़ करूँ, एटलीस्ट बेसिक तो बोलो. I'll create a new data set. I'll call the data, okay, where my raw data is available.
Third, I'll create a new variable when I'm going to store this changes, and then I'll use the substr function. We'll select the variable in which the data is there. Then we'll give the starting position. Let's suppose I want to read from second position, I'll give that, and then I'll give the length. Let's suppose I want to read 2 letters, I'll give 2. So first argument is variable name in substr, second argument is starting position, third argument is length. Go step by step, no need to get into the conclusion or you need to be correct in the beginning itself. ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये कमेंट्स पॉपअप होके अपने आप हट क्यों जा रहे हैं? हाइड यूज़र पुट टाइम आउट. ठीक है, लेट मी. if you get selected, then you go under 2 months of training which is unpaid. After that there will be probation period in which we will paying you 8K after evaluation of performance. Will allow you package, and we are looking for long term. So if you get selected, you need to work with us for at least 2 years. See, अभी सब हाँ हाँ बोल दो, बाद में तो खैरियत है, कौन ही याद रखता है किसको. वो आपको पकड़ के तो रख नहीं सकते, राइट. आज के टाइम पे ब्रो इंडस्ट्री में कोई किसी का नहीं है. एक बार कैंडिडेट सीख जाता है, he gets wings, he flies, and there is no certain rule or such rule which can stop you to change the company. But obviously, as a good gesture, you should maintain a good relation with the company by paying them some money if there is a breach of agreement. But it's not like कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, यही करना पड़ेगा, 2 साल ही काम करना पड़ेगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. You can leave whenever you want. जब चाहो तो छोड़ सकते हो कंपनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कर लो प्रवीण. It's your beginning, you should start. एज अ फ्रेशर हूँ 2024 का पास आउट. फिर तो अच्छा खासा टाइम भी हो गया प्रवीण. करो, ये मौका छोड़ना नहीं. बाद में एक्सपीरियंस ले लो, बाद में छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो. नो वरीज इन दैट. ओके, ठीक है. आई कैन सी 3 or 4 पीपल आर लाइव. भाई लाइक सैटरडे आज क्या है, मतलब सभी लोग वीकेंड मना रहे हैं. गलत टाइम पे मैं लाइव आ गया. व्हाट इज़ हैपनिंग? सर फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब है मेरी, स्पेशलाइजेशन जावा, बाद में जावा. फ्रंट एंड डेवलपर कहीं नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लो. ठीक है, उसमें भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं. जावा, HTML, CSS, UI UX, तो कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट गेट सम बेसिक नॉलेज, गेट सम एक्सपीरियंस, देन यू डोंट नीड टू वरी. ठीक है. Come on guys, if you have questions, ask me quickly, or else if you are not getting much questions, we will be ending this live discussion. बाद में एक्सपीरियंस के बाद TCS में अप्लाई होगा ना. सिर्फ TCS क्यों प्रवीण? यू कैन अप्लाई एनीवेयर. देयर आर मेनी बिग कंपनीज apart from TCS. TCS is one of the company only. You can apply to any of the company, product based company even. ओके सर 2 months अनपेड ट्रेनिंग है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डू इट.
दैट इज़ माई फाइनल सजेशन. अगेन इट्स अप टू यू. मेरा ऐसा मानना है, बीइंग अ फ्रेशर, इफ़ यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटी एंड इफ सम कंपनी इज़ गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, आप उस लॉजिक से कंपेयर करो ना, जब ट्रेनिंग लेनी होती है तो आप पैसे भर के करते हो. तो अगर कोई कंपनी मौका दे रही है 1-2 महीने के लिए, वो पे नहीं भी कर रही, तो उसको मौका समझो कि कहीं ऐसा टाइम होता है कि जब आप पैसे दे के सीखते हो, और कंपनी आपको अगर सिखा रही है, इनिशियल कुछ मंथ्स नहीं दे रही है बट आपको पूरा वर्किंग नॉलेज दे रही है, तो ले लो. उसके बाद आपको जॉब मिल ही जाएगी वहाँ, नहीं तो कहीं और. Can you please let know how many questions they ask in clinical, what we can do to do my best? It totally depend upon, but on an average you can assume, let's suppose if 2 rounds are there, technical round most probably एक ही होता है, but कहीं कहीं 2 होता है. So on an average you can assume 10 questions, 10 to 15 question or 15 questions. 10 से 15 क्वेश्चन अज्यूम कर सकते हो. ठीक है. क्लिनिकल में से कितने, डिपेंड अपॉन द इंटरव्यूअर, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. इफ़ ही फील्स कि उसको कोई प्रोजेक्ट पे आपको इमीडिएट बेसिस पे डालना है, इफ़ इट इज़ अ स्मॉल कंपनी दे माइट आस्क यू मोर फ्रॉम द क्लिनिकल बिकॉज उनका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होता है. Or else in a big company their focus is balanced, but obviously having a good knowledge of clinical part is good, right? So you can assume ki 50-50, 50% SaaS, 50% clinical. Likewise, interviews, in the interviews you have to prepared कि 50% ऑफ SaaS का वेटेज आएगा ना 50% क्लिनिकल का. 6 मंथ सैलरी 8,000 है सर, कोई दिक्कत नहीं है प्रवीण, डू इट. लाइक अगर 3 महीने बाद भी कोई दूसरा इंटरव्यू मिला जिसमें आपको बेटर ऑफर मिल रहा है तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, 6 मंथ्स भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी. अभी वो जो भी बोल रहे हैं से यस यस यस, जॉइन द कंपनी, and if they are not increasing the salary in a good way as per the market rate, as per your experience, leave it. Question we can get from clinical part, TLF. Like I can give you some simple examples. They might ask you like which domains or data sets you have created from SDDM, same from Adam, and then same from table or listing. ठीक है. What is the difference between an SDDM and Adam data set? What is the difference between a table and listing? Okay, then let's suppose you have created medical history data set. So which variables you have created, what difficulty you have faced. They might ask you in depth about certain variables. Let's suppose there is a medical history data set, so MH start date and date, MSD code, MS term, where it consists of the medical history term, right? Migraine or what so on, what was the migraine start date, if it got ended then the end date, or else the ongoing, right? बहुत सिंपल होता है. ऐसा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, if you want we can arrange an interview for you, no worries. Okay, arrange an interview means like internal interview where we gonna give you the feedback, not with directly with the company. 7,000 में खाने पीने में ही जाएगा. स्टार्टिंग में नहीं सोचो प्रवीण, लाइक आई हैव वर्कड फॉर अ जॉब जिसमें सैलरी थी ही नहीं, आप इतना क्यों सोच रहे हो. I just wanted to confirm few things. Is there any bond legal agreement? अगर legal bond भी होता है ना तो that can be breakable. No worries in that. Real kind project are only internal practice project and after probation period will there be any full stack development? ऐसा क्वेश्चन पूछ नेचर को. सी ऐसा सब ज़्यादा टेक्निकल पूछोगे तो वो भी घबरा जाएंगे, वो किसी और को देखने लगेंगे. इफ़ यू रियली वांट दिस जॉब गो एंड गेट इट. बाद में सब चलता है. If you don't get the opportunity here, you just switch the company, right? I was happy for 2 minutes as you said about you'll get me the interview, but it's okay. काश ऐसा हो पाता. But do let me know, आकाश, अगर आपको कोई वैकेंसी दिखे तो मुझे एक बार कॉल कर लेना. एंड अगर वहाँ पे अपने कोई एक्स स्टूडेंट या कोई भी हुआ तो आई कैन अरेंज अ रेफरल फॉर यू, डोंट वरी. ओके,
ओके सर बोल दूँ? हाँ हाँ बोल दो भाई प्रवीण, ऑलरेडी आपको टाइम हो चुका है, डोंट वेट। स्टार्टिंग में सैलरी वगैरह कुछ नहीं देखते, गो एंड गेट द जॉब। एक बार सीख गए उसके बाद अभी वो आपको बहुत कंडीशंस लगा रहे हैं, उसके बाद वो सारी कंडीशंस के साथ उनको छोड़ देना कि ये रहे आपके कंडीशन और ये रहे आप मैं चला। दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन हाई पेइंग रोल्स। जब कंपनी बहुत ज़्यादा कम पे करती है ना, कुछ छोटी कंपनीज ऐसा करती हैं, तो कैंडिडेट भी लाइक सीखने के बाद तो उनका ऐसा स्ट्रक्चर है, तू कौन और मैं कौन। दैट्स वाई दे हैव दिस बॉन्ड एंड एवरीथिंग। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ पीपल। सीखने के बाद कैंडिडेट बोलता है तू कौन और मैं कौन। इट्स एन रियलिटी। थैंक यू सर, आई एम गोइंग टू डू अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ दिस पार्ट, जस्ट जोकिंग। यू कैन डू इट, दैट्स एन रियलिटी व्हाट आई एम सेइंग नाउ। कंडीशंस के रूल तोड़ूंगा तो फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दी, कोई ज़रूरत नहीं है। आई ब्रोक दिस लॉन्ग बैक एंड एक्चुअली जो इनिशियल 6 मंथ्स या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसका ज़्यादा मैटर भी नहीं करता। नेक्स्ट कंपनी वो आपके इंटरव्यू के बेस पे ही आपको ले लेती है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस 2 4 5 साल का होगा ना, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है या लीगल वो नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। 3 6 महीने के एक्सपीरियंस लेटर को तो कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं है। द रियलिटी इज़ सर TLF आर लिटिल टफ, एनी सजेशन? टेबल लिस्टिंग्स आर नॉट दैट मच टफ। सी लिस्टिंग्स आर सिंपली लिस्टिंग योर डेटा। जो आपका डेटा है वो स्ट्रक्चर में आप लिस्ट करते हो। व्हाट इज टेबल? टेबल में थोड़ा एनालिसिस करके, जैसे एन, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारे स्टैटिस्टिक्स या अलग अलग काउंट करके आप टेबल में प्रेजेंट करते हो। लिस्टिंग में तो सीधा लिस्ट ही करना है, क्या डिफ़िकल्टी है? कोडिंग एक बार आप सीख लो कि कैसे उस स्ट्रक्चर में लाना है। टेबल में थोड़ा बहुत एनालिसिस, थोड़ा सा उसमें प्रेजेंट करने के साथ आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ता है टेबल में। जस्ट प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट। कनेक्ट मी इफ़ यू आर फेसिंग मच डिफ़िकल्टी। मतलब मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी है। जस्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 5 टेबल्स, 4 5 लिस्टिंग्स। 5 लिस्टिंग कर लो, 5 टेबल प्रैक्टिस कर लो। पहले कोड्स को देख के प्रैक्टिस करो, फिर बिना देखे प्रैक्टिस करो, बिना देखे वो स्ट्रक्चर को क्रिएट करो, देन यू विल बी गुड इनफ। 8 to 9x. Sushant is asking, sir, 8 to 9 years of experience, what will be the salary in SAS? See, SAS is a software. The role name is statistical programmer, guys. So 8 to 9 years में you can assume, अभी एक recent data मैं बताता हूँ कि अभी ही हमारे एक स्टूडेंट का 3 years में उनकी सैलरी है अप्रॉक्स 19 to 20, एंड किसी की कम भी है 3 year में, तो उसकी है कम से कम 12। तो उस हिसाब से जो लास्ट मुझे डेटा पता है, मुझे एक व्यक्ति ने कनेक्ट किया था, याद से 3 साल पहले की बात है, तो अज्यूम ना करना हो, एग्जैक्टली प्रिसाइज बताना हो, तो 9 ईयर्स में उनका सैलरी था अप्रॉक्स 40-45। तो 45 था उनका। ज़्यादा भी हो सकता है, 50-55 भी हो सकता है। थोड़ा बहुत वेराई करता है, मतलब 5 से 10 लाख तक वेराई करेगा ऊपर की सैलरीज पे। सर आप वीडियो बनाने वाले थे वो 2.5 लाख वाले इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट के साथ। प्रसन्न जी, तो वो स्टूडेंट ने कनेक्ट नहीं किया मुझे अभी तक। बाकी मैं तो बना दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लगता है कि यार मतलब मेरा तो एक ही फंडा है कि जो है जैसा है वैसा बोल दो, ज़्यादा घबराना नहीं है। बट वो स्टूडेंट आना चाहिए राइट सामने। क्योंकि मैं बोलूँगा तो ये बात हो जाएगी कि एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट की बुराई कर रही है, एंड दैट्स एन बैड थिंग। बट कैंडिडेट खुद बोलेगा तो ठीक है। आई फील दिस इज़ द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, कि कोई बंदा आपको प्रॉमिस कर जाए कि मैं आपको जॉब दिलाऊंगा, और फिर वो आपको जॉब दिलाए ना। उसको जीवन भर याद रखना चाहिए कि उसने इतना बड़ा झूठ आपसे बोला कैसे।
how he was able to lie such big thing, even he was knowing, उसको पता है फिर भी वो झूठ इतना बड़ा कैसे बोल गया. तो उसको एक बड़ा लेसन तो मिलना चाहिए. ऐसे कोई भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन, क्योंकि 100 में से 50 तो, आज से पहले तो 100 में से 80 ऐसा बोलते थे, आज भी 100 में से 50 ऐसा बोल देते हैं. ओके सर, कंपनी छोड़ने के बाद एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट मिलता है ऑब्वियसली मिलेगा. सर, कैन सैस डन पार्ट टाइम? मीन्स द क्वेश्चन माइट बी can SAS be learned in part time? Obviously. In our case, like we teach students for 1 or 1.5 hour, and then student need to practice for minimum 2 hour and maximum up to so on. Okay. Today, I don't know guys, what is the, let me make some changes in the setting. Comments अपने आप चले जा रहे हैं. Hide all chats, top chats. I cannot see the comments now. गड़बड़ हो गई. Now I cannot see the comments. Chat viewing option, top chats. Wow. Let me do one thing. Let me join through my phone, जहाँ पे मैं comments देख पाऊँ. Now I can see your comments, guys. Thank you. आकाश बोल रहे सर, it is possible to get clinicals as programmer job in first or second chance? If yes, what kind of person gets selected? That's a very good question. Yes, it is possible. In the past, many people have got selected in first or second attempt itself. And what kind of person gets selected? The person who is consistent throughout his journey, learning journey. Okay, the person who are very clear with the basic concepts. Okay, what can be the basic concepts? For clinical, basic concept can be the difference between SDM ADAM, difference between table listing, difference between two different data sets, what are the important or core variable of a particular data set. You should be able to explain clearly the logic of the variable, the programming logic and the clinical logic as well. In SAS, basics are like you should know how many topics you have learned, like functions. In functions, how many functions are there? Character, numeric, date and time, concatenation, put, input. Then you should know, if they are asking ki explain some 5 functions, you should be able to explain those 5 functions. If they are asking definition, explain the definition. If they are asking syntax, explain the syntax. Like a syntax for scan function is, first you're gonna write scan function, then in the parenthesis first argument will be variable name, second argument will be word position, third argument will be delimiter, fourth argument will be modifier, right? And on top of this, you should able to also solve a scenario. If they are giving you a scenario, let's suppose there is a string, my name is Shubham and he wants to extract Shubham. So how you can extract it? So in that case, you need to tell the syntax of scan to solve this, to get Shubham name from that string, Shubham substring from the whole string. तो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है सुनने में, बट ईजी है थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद.
आकाश, ऐसा ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। फंडामेंटल्स क्लियर है ना जिसके, तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती। फंडामेंटल्स अगर क्लियर है तो क्लिनिकल का सिंपल सा लॉजिक है, अच्छे खासे एसडीएम एडम टेबल लिस्टिंग्स क्रिएट करो, अपने आप लॉजिक क्लियर होता जाएगा। प्रोसेंजित 99% इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट प्रॉमिस करते हैं, कुछ हैदराबाद के इंस्टीट्यूट यूएसए प्लेसमेंट प्रॉमिस करते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग बात बोल दी आपने, यूएसए प्लेसमेंट। एक्चुअली हैदराबाद में पॉसिबल है, हैदराबाद में ऐसे होता है, बट प्लेसमेंट नहीं हो पाता, होता था ऐसा बोल सकते हो। अब तो अगर कोई कैंडिडेट हैदराबाद से इंटरव्यू देता है ना, तो इंटरव्यूअर 2 बार क्रॉस चेक करता है उसको, इफ़ द इंटरव्यू इज़ ऑनलाइन। ये किस्सा मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं हैदराबाद में एक स्मॉल कंपनी में काम कर रहा था। आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने ही हुए मुझे, एक एमएनसी में इंटरव्यू मिल गया। आई हैव गिवन द इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर फोकस वॉज थोरो कि ये कैंडिडेट जेन्युइन है, बिकॉज द इंटरव्यू वॉज हैपनिंग ऑनलाइन एंड हैदराबाद का फेक इंटरव्यू में क्लिनिकल में एक बड़ा नाम हो चुका है। नाउ इट गॉट, अब तो पुणे वगैरह सब धीरे धीरे फेमस हो गया है फेक इंटरव्यू में, बट क्लिनिकल के रोल के लिए, स्पेशली स्टैटिस्टिकल के रोल के लिए हैदराबाद काफ़ी फेमस था आज से कुछ साल पहले। तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में मुझे थोरो चेक किया, इंश्योर किया कि मतलब ये जेन्युइन बंदा है कि नहीं। सो एंड येस, अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट दे डू लाइक दिस प्रॉक्सी इंटरव्यू, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बट इंडिया लेवल पे फेंकना तो ठीक था प्रोसेनजित, यूएसए लेवल पे फेंकना थोड़ा ज़्यादा हो गया, राइट? आई बिलीव सर, इफ those people do not give job after 2 months of unpaid training, then कोई टेंशन नहीं, आप एक्सपीरियंस लेने गए थे, इतना ज़्यादा नहीं सोचो। 2 महीने बाद आप ही अप्लाई करके दूसरा ले लेना, उनको आप भी मत पूछना। आप टारगेट ऐसा रखो कि 2 महीने बाद वो मुझे क्या, मतलब 2 महीने बाद मैं ही उनको नहीं पूछूंगा। सर कैन हैज जॉब डन बट ओके आंसर्ड। when you did your training, what did your SDM Adam tip? When I did training, I didn't learn the SDM Adam table listing. I skipped the whole clinical part. To be frank, सच बोलना था, I was not that much serious at that time. तो it was way back, right? Like उस टाइम पे चीज़ें अलग थी. But later on I faced difficulty and then I have to go through it. Because job में तो सारी चीज़ें करनी होती हैं. So sir, is base as part is heart if it is in your, if in SAS the base part is heart, okay. If it is in your fingertip, then the clinical part V हो जाएगा after understanding the IG. I believe SAS can be learned by everyone easily, guys. And clinical can be also learned easily, but one need to have the patience. In clinical, what happens? People don't have the patience, because clinical is about more time, multiple things at a time. You need to see the spec, you need to see the maybe IG, you need to see the CRF, maybe you will go and check the SAP. Eventually you will not do this, but as a learner you might go through all this, and finally you will implement the change in the coding window. So all this thing together for a fresher, they feel like, oh, because in the beginning they started with SAS, right? So it feels like, अरे पहले तो एक ही चीज़ था, अभी तो 3-4 चीज़ एक साथ चल रही है simultaneously, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है. It is all about patience. थोड़ा सा टाइम दो क्लिनिकल को, 1-2 मंथ्स अच्छे से प्रैक्टिस करो, इट बिकम्स सो स्मूथ कि वो आपके नेचुरल उसमें आ जाता है. क्या कैसा है आप कभी भी बता सकते हो. But create good number of SDM Adam table listings. What should be the minimum number? I believe 3-4 SDM, 3-4 Adam, 3-4 tables, 3-4 listings are also enough to get the clarity.
Praveen, sir, one should not think about salary at the beginning of the career. What was your first salary? My first job was unpaid, right, in clinical industry. See, I have worked on multiple roles. I have worked in a startup in backend. I have worked before somewhere else as well. I did multiple jobs, but the stable one I found, that was clinical. Akash, how they fake and how they check? See, the fake is simple, right? Proxy इंटरव्यू मीन्स कि लिपसिंग आप करोगे और आंसर कोई और करेगा, आप सिर्फ मुंह हिलाओगे, आंसर कोई और करेगा, ओके। और फिर हैदराबाद में क्या करते थे, फिर आप सेलेक्ट हो गए, आप क्वेश्चन आपको होगा कि सर आप लेट सपोज 1 ईयर का कोई फेक डाल के सेलेक्ट हो गया, बट वो काम कैसे करेगा? तो वो कुछ जो कंसल्टिंग फर्म होती थी या इंस्टीट्यूट होती थी, वो आपको लोग भी प्रोवाइड करते थे स्टार्टिंग के 6 महीने 1 साल के लिए। वो तो कंपनी से काम आपको एलोकेट हुआ, आपने काम उसको सौंप दिया, उन्होंने काम करके आपको दे दिया। तो 6-7 महीने ऐसे चलता है और 6-7 महीने 1 साल में आप सीखते जाते हो। ऐसा बहुत कुछ होता था पास्ट में, अभी वो चीज़ कम हो गई है। क्लिनिकल सैज फ्रेशर सैलरी आफ्टर 3 years, क्लिनिकल सैज फ्रेशर एंड आफ्टर 3 years। सी एग्जैक्टली लेट्स टॉक अबाउट 3। अभी मैंने मेरे एक स्टूडेंट का बताया था, फॉर वन स्टूडेंट इट इज़ अप्रॉक्स 20, फॉर अनदर स्टूडेंट इट इज़ अप्रॉक्स 13, ओके। सो एक की 18 से 20 के बीच में और एक की अप्रॉक्स 13 के आसपास है 3 years में। One of my classmates had joined an institute of Hyderabad for USA placement. If you want, I can also tell you the name of institute. Tell me, it's interesting. It's like इतने ये तो कितना बड़ा काम कर रहा है कैंडिडेट को, इंडिया से सीधा बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ इंपोर्ट किया और वहाँ एक्सपोर्ट किया। इट्स ग्रेट, लाइक दे माइट हैव क्रैक्ड समथिंग, लाइक उन्होंने कुछ तो फिगर आउट किया होगा सिस्टम में कि कैसे लूप होल को फिल करते हैं। Yeah, here some Prosenjit is telling 3 to 10 SDM will not give you enough clarity data set. See, like my suggestion was, even if you do 3 or 4, you have enough knowledge, you can crack the interview. But obviously if you create more number of data set, then your probability is high because your knowledge itself is good enough. But to be frank, if you create 3 or 4 data sets or table listing, you get the whole structure and idea how the things happened. But if the interview is in depth, then you will lack. In that case, at least 8 to 10 will help you. 20K after 3 years of experience. 20K after 3 years of experience. But they have built a great brand online by posing everything in a good manner. What's the reason behind doing this? Already they have a good brand and everything. I think उनका तो acquisition भी हुआ है. They have funding वगैरह, maybe, I'm not sure. What's the reason they have to do this, all such things? Kumish, you are telling that 20K after 3 years of experience. 20K नहीं होता यार. 3 years of experience के बाद minimum आपकी salary 1 या 1.5 होगी, 1 lakh और 1.5 per month. Akash is telling coupon code of CSA. It's not about
coupon code of CSA, Akash, actually will connect to the vendor and vendor can help us to get some discount. ठीक है, तो आप मुझे कॉल करना, मैं वेंडर को एक बार कनेक्ट करूँगा एंड वी कैन गेट सम डिस्काउंट फ्रॉम देम. Okay, sir, you said 20 LPA, he interpreted 20K. Okay, it's, I told for one of the student it is 20 LPA working in Paraxel. For one of them it is around 13 to 14. 13 to 14 LPA, it's LPA, lakh per annum. Akash, no, for 150 question. अच्छा, आकाश आई नीड टू चेक, मुझे मैसेज कर दो, मैं चेक करके आपको बताता हूँ, ठीक है. प्रथम, sir, I got selected in TCS for the role for clinical SAS programmer. I submitted the documents, everything. Now they said they will wait for my training to complete, then they'll hire. ऐसा तो नहीं होता. आई एम नॉट श्योर प्रथम. मोस्टली कोई भी कंपनी अगर इंटरव्यू लेती है उसके बाद आपको फिर हायर कर, इंटरव्यू लेने के बाद हायर कर लेती है क्योंकि उनका फिक्स स्ट्रक्चर होता है. व्हेन दे गोना हायर अ कैंडिडेट, व्हेन दे गोना स्टार्ट, व्हेन दे गोना पुट देम ऑन ट्रेनिंग एंड व्हेन दे गोना पुट देम ऑन प्रोजेक्ट. कभी भी कोई भी कंपनी मोस्टली वैकेंसी निकालने से पहले ही ये डिसाइड कर लेती है कि कब आपका इंटरव्यू लेंगे, कितने दिन में वो कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेंगे, कब से उस कैंडिडेट की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और कब आपको प्रोजेक्ट पर डालेंगे. एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड. तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी ट्रेनिंग पूरा होने के बाद, तो आई एम नॉट श्योर, ऐसा तो बहुत कम होता है. लेट्स होप फॉर द गुड, बट ऐसा सिनारियो तो ये नेगेटिव सिनारियो है जब कंपनी ऐसा बोलती है तो. बट नॉट श्योर, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ बिकॉज देयर थिंग्स आर प्री प्लान्ड. कंपनीज का प्री प्लान्ड होता है. दे विल नॉट वेट फॉर द कैंडिडेट कि आपकी पढ़ाई पूरी होगी फिर हम करेंगे. बट इफ दे आर टेलिंग देयर माइट बी सम रीज़न, आई एम नॉट श्योर. सो व्हाट आर द चांसेस दैट दे विल हायर मी ट्रेनिंग इन SDM, ADAM and TLF राइट नाउ? Maybe Pratham, if they really liked your, if they really found that you are a good candidate for them as per the current knowledge, the training you already got, and they found that instead of they invest time on you, you are already ongoing training, and they might found this key, you just complete your training there and then they're gonna hire you. But okay, this can be the chance, but most of the companies they have a fixed pattern that they're gonna hire when and they're gonna put you on project. But बोल नहीं सकते ऐसा. अगर आपको उन्होंने टाइम दिया है तो फिर आपको देंगे. Sir called me, told me congratulations, I was selected after 2 weeks, but they told me they'll wait for the training because it was TCS through my academy. I think you are learning in Kitel, right? I think Kite Talents or something. Am I correct, Pratham? yes. देखा, आपने कंपनी का नाम बोला, मैंने आपके इंस्टीट्यूट का नाम बोल दिया. ओके. So that's interesting. By the way, Kite Talents or whatever the institute name is, वो फीस कितना ले रहे हैं?
2 lakhs or how much, 1.5 or 2 lakhs, and I think they are training you on end to end, right? SAS भी पूरा, R भी, Python भी, then 1 year का उनका प्रोग्राम होता है, इंटर्नशिप वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, राइट? जस्ट कन्फर्म द सेम, व्हाट आर इंक्लूडेड इन द ट्रेनिंग एंड ओवरव्यू. सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है. सी, अगर वो इंटरनल इंटरव्यू अरेंज कराया है तब तो वो वेट करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी अवेयर है प्रोसेस से. अब आपने मुझे बताया तो अब मुझे ज़्यादा क्लियरिटी आई. दे गोना वेट एंड दे गोना सेलेक्ट यू, डोंट वरी इन दैट. Yes, very. I have knowledge of SAS, but I haven't got any job. You have knowledge of SAS or statistical programmer role? How about doing clinical SAS after B Pharma? That's totally fine. You can do it. But they teach Power BI, Base SAS, Advanced SAS, Clinical SAS, R and Python. Now that's interesting. And how many months of training it is? Neeraj is telling only SAS programming. Neeraj, in current, in the recent years, you can say like only with the knowledge of SAS, getting a job on in CRO companies as a statistical programmer is way difficult compared to 5 years back. 5 साल पहले थोड़ा इजी था कि आपको टूल्स के नॉलेज पे वो हायर कर लेते थे, बट अब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया. स्टिल मैनी कंपनीज हायर people who have even zero knowledge, but वो रेशियो बहुत कम है. So right now most of the companies are getting good candidates like who have complete knowledge of SAS and clinical, so they are focusing on those candidates only. So some students after that they select some students for internship through interview and rest. They said 6 months of training, 6 months of interview, but it's been 10 months. They are still giving the training. Too much delay since October 2024. No worries, Pratham. If you are learning, if you are going forward, if it is taking little time, that's fine. If it is worthful, then it's fine. If you are feeling you are going forward. Okay, sir, how should I get knowledge of clinical part? There are two ways. You can purchase our pre-recorded course where you can get all these materials of clinical files and everything. Another is just get the training either from us or from any of the institute. Okay. Okay. So yes, they're teaching, but first company called me about my selection, then they said they will wait for my training completion, so I got a bit worried. No worries, now your
institute and that company is having the connection, right? So they already know, so they already want you to complete the training and then to get selected. So no worries in that if it is internal. Might be they found something interesting in you. It might be communication or the knowledge you already have, you are able to deliver in a very well way. So they are interested you, to hire you, and they are waiting you to complete the training first. That might be the case. Okay. So guys, if you have some more question, you can ask me quickly, or we'll end this live discussion, live Q&A. I'll give you one example today what happened. Today when I started this live, the first live I started, उसमें कुछ व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे, वो वीडियो किसी को रीच आउट तक नहीं हुई. दूसरी बार स्टार्ट किया तो भी नहीं हुई. तीसरी बार स्टार्ट किया मैंने लाइव, और फिर भी number of people are like 1 or something. I was about to end the live, but someone asked a question. I started answering him after 10 minutes, और उसके बाद now we did this live today for 52 minutes. What if कि पहली बार ही जैसे मैंने लाइव किया और 5 मिनट में जब बंद कर दिया था मैंने, तो दूसरी बार वापस शुरू नहीं किया होता. दूसरी बार जब बंद किया उसके बाद भी मैंने तीसरी बार शुरू किया. आई थॉट कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द यूट्यूब algorithm or something. It is not sharing my videos, and again waited for the third time for 10 minutes, and now people got connected and I'm getting the question. This is what happened in real life as well, guys. पहली बार कुछ ट्राई करते हैं, नहीं वर्क करता. दूसरी बार करते हैं, नहीं वर्क करता. तीसरी बार करते हैं, उसके बाद भी हमको रिजल्ट नहीं मिलते हैं. You wait for some time, you wait with the patience and things start working. अब मेरे लिए तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. Even if I don't do this live, that is fine to me. But you can compare with an example of getting a job or applying for a job, or cracking an interview. So that's how it takes your patience, right? They mentioned that my communication and base are something which they found to be good, and they said they'll bet on me and learn new things and pick them up quickly. Oh, it's a great thing, Pratham. Neeraj, we can have a detailed discussion. There is a link in the video description, one-to-one counseling. Through that you can connect to me and we can have a detailed discussion. SAS based exam, like how to crack, how many questions? आकाश, बेस SAS एग्ज़ाम के लिए हमने 10 टेस्ट की एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन वो की है, रेडी किया है. edu.clinical study academy पे जाओगे ना, तो एकदम नीचे जाना, टेस्ट वाले सेक्शन में जाना, आपको वहाँ पे बेस SAS एग्ज़ाम प्रिपरेशन का एक टेस्ट मिल जाएगा. उसमें 10 एग्ज़ाम है. हर एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन है अप्रॉक्स. 10 एग्ज़ाम्स में यानी 50 इंटू 10 कर लो. तो अगर आपने वो टेस्ट दे के प्रिपेयर कर लिया तो 100% आप बेस SAS एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे. बिकॉज उस टेस्ट में हमने उन 10 एग्ज़ाम्स में हमने रीसेंट क्वेश्चंस को ऐड किया है. जो रीसेंट बेस SAS एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए वैसे हमने ऐड किए हैं. इफ़ यू डू दैट you can crack the exam easily. Sir, clinical SAS company prefer majorly which kind of people from which sector? Clinical SAS companies, it's not clinical SAS companies, you can say pharmaceuticals, CROs, clinical research organization. If you're talking about a fresher, they prefer the candidate who are from statistics, biostatistics, life science,
biotechnology, pharmacy, and many other fields, wide range of fields. Anyone who have some exposure of life science, pharmaceutical, clinical research, statistics, mathematics, data science, wide range of technical fields, even non-technical fields, it makes you eligible, and then rest is upon your skills. The skills like SAS, or the clinical skills like SDM, Adam table listings, and then other languages are right. So okay, ठीक है, it's 56 minutes. In another 4 minutes we're gonna end this live discussion. You can ask your questions quickly, guys. Praveen, if you provide backend plus front-end work in other technologies like MERN, then it can be done for 2 years, but you have to give commitment of 2 years plus 6 months probation for front-end. It could be wrong decision because when you switch, now you will have no coding experience. Okay, ऐसा आपको HR ने respond किया. Am I correct, Praveen? Okay, just give me a minute, guys. नहीं, HR नहीं sir, my club boss told me. Okay, fine है. ठीक है. So guys, I think that's all for today. देखो, even we got connected through this live, we get to know about a lot of interviews, कि कितने interviews चल रहे हैं. A lot of people share about their recent interviews in the live itself, and that's a good thing. So I think there should be a community, or there should be something where we can share our recent experiences. It's like give and take. Someone is asking, is clinical SAS will be replaced by AI? AI will help a lot in the clinical part. The things which we are automating using macro, it's gonna go to the next extent by AI. So the work which was happening in 2 days, it's gonna happen maybe in 1 day or maybe in half of the day. मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था कि इंडियन आई थिंक इंडियन हेड जो थे कंपनी के फार्मास्यूटिकल के, किसी ने उनसे सवाल पूछ लिया स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर ने कि क्या होगा अगर मतलब एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. इंडिया हेड के साथ मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ किसी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर ने पूछा. इट इज़ वन ऑफ द टॉप 5 फार्मास्यूटिकल और टॉप 10. तो वो इंडियन हेड ने, जो हेड है पूरे इंडिया के, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखो, हमारा गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट तक पहुंच पाना, यानी हमारी ड्रग उन तक पहुंच पाए. एंड सो आवर फोकस इज कि जो स्टडीज़ को 5 या 10 ईयर्स लग रहे थे, हम उसको कट डाउन करके हाफ कर पाए. अगर 10 ईयर्स लग रहे थे, वी शुड एबल टू कट डाउन टू 5 ईयर लग रहे हो स्टडी में, कट डाउन टू 2.5. और ऑलरेडी वो कंपनी ने कुछ एआई कंपनीज़ के साथ टाइप किया और उनको बोला है कि आप क्या क्या चीज़ें हमारी ऑटोमेट कर सकते हो. बट द वेरी फर्स्ट थिंग दे हैव एंश्योर्ड दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी की आप ये इंश्योर करो कि आप हमारा डेटा, क्योंकि वो डेटा सब एक्सेस करेंगे वो एआई कंपनी, तो डेटा हमारा सिक्योर रहेगा. जस्ट इंश्योर दैट. तो ये चीज़ होगी, जो टाइम है वो कट डाउन हो जाएगा. कंपनीज कैन create the drug faster the way they are able to create
previously. ठीक है, अब वो उनका ज़्यादा इफ़िशेंसी पे फोकस होगा, कैसे वो ज़्यादा स्टडीज़ कंप्लीट कर पाएँ ईयरली, अगर पहले 1 या 2 हो रही थी, अब कैसे वो ज़्यादा कर पाएँ। कोई भी चीज़, अगर जो काम 1 ईयर में हो रहा था, हाउ दे कैन कट डाउन टू 6 मंथ्स, 7 मंथ्स और 5 मंथ्स. So they are focusing on more, they are not focusing on कि AI आके आपको रिप्लेस कर पाएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ऑन दिस रोल. A lot of discussions are there, thorough checks are there. Statistical programmer are almost at the final level of this role. जब आप finalize करते हो, data get into the submission part, तो AI cannot surpass this role, okay, but it can enhance the work which is done on this role. It can enhance the automation for sure. Thanks a lot, sir. I was very disappointed about the TCS, but now I'm happy. Yeah, obviously, like if already it's between the institute and the company, then it's a pretty smooth process if it is already decided. Company don't do code from scratch, they work in macros. Yeah, they work in macros, but Akash, the main agenda is, let's suppose if I'm putting a fresher to work with macros, अब मैक्रो में कोई भी डिफ़िकल्टी आई है, मैक्रो में कुछ चेंज हुआ, तो फ्रेशर कैसे करेगा अगर उसको स्क्रैच से कोड करना नहीं आता. द बेस्ट पार्ट of knowing the coding from scratch is that you can change anything, you can do reverse engineering. But if you're too much dependent upon having not complete knowledge, not having the knowledge from scratch, it becomes difficult in longer term. So yeah, so I think guys, now we can end this live discussion. That's all for today's, guys. Have a great weekend, and thank you everyone. Bye bye everyone, and good night everyone. Enjoy, guys. Bye bye.